Is it a remix song, for example? थोड़ी पंछी हो क्या थोड़ी पंछी हो क्या Is it a movie promotion stunt for the new release of Hero Panti 2? Okay, you guys have to say it first. Now say it properly like me. Or is it just a reaction video? Is it perhaps a gaming video? The list on and on. And this is new learning for all of us. The nature of content trends is changing as platforms are evolving. And today, trends are different. Firstly, they are continuous in that they're not just restricted to one viral video, but they are in fact made up of many, many videos. Secondly, they are interconnected such that these videos and formats tend to mix and mash, borrow and speak to each other. And thirdly, they are often cumulative in that these trends continue to grow and evolve from one iteration to the next and to the next. And we are seeing examples of such content trends everywhere. Now, a few months ago, many of you would have seen videos around. But what we've begun to notice is that many successful creators are, in fact, a healthy mix of not one alone. They are making content that increasingly talks to each other. Just take these examples, for instance. These are some of the most popular videos in the last year. And the examples are surprising. It's gaming creators like Mortal who released comedy sketches, and then comedy creators like Tanmay who made learning videos, and learning creators like Aman Dhattarwal who released web shows, and web shows made by channels using 1 minute shorts. Isn't that exciting? And the most exciting thing for me is that all of this innovation is happening right here on YouTube every day. And to be frank, where else can it happen? YouTube is the only platform where all these different formats can coexist and speak to one another, be it long form videos, snappy shorts, live streams, and deep dive podcasts. And this list will only continue to grow as we see innovation in shopping and NFT, the metaverse, and much more. And as we think about YouTube in the future, we expect to see more creation that is both hybrid and multi format. This creates an interesting opportunity, not just for creators, but especially for YouTube creators like you to add new tools and techniques to your creative toolkit that can help you adapt to this changing world of video. And today, I wanted to share some of my favorite examples with you. So let's begin. One of the key changes that we are seeing is in the origin of trends and creativity itself. Today, creativity isn't only dependent on your unique creative voice, but it is equally dependent on your creativity in a larger cultural moment. And this creates an amazing opportunity for creators to think of themselves as creative remixers, borrowers, and trend spotters. Let's take an example of just the beauty category, for instance. Some of the biggest videos this year have been inspired directly by popular looks from new movies and music videos. So when Nora Fatehi released her music video Irani, we saw creators like Ishpreet Dang recreate the Nora Fatehi look using shorts. And when it came to time for Gangubai, for instance, makeup creators like Dikshita Jindal were able to release makeup transformation videos, literally transforming her look into the avatar of the trending movie actor. And
And last December, when Shark Tank became the phenomena on TV, we saw Shark Tank blow up in the YouTube universe with interviews and episode recaps, honest reviews of memes, and even sketch parodies. In fact, the video Sasta Shark Tank by Ashish Chanchalani has over 45 million views and counting. And if we're talking about taking inspiration from popular culture, we must talk about Squid Game, because Squid Game meant that infamous Dalgona can be seen. And while we saw many creators recreate that famous scene, my personal favorite was Shorts creator Pragati Verma, who took her passion for Dalgona to another level, making shorts of Dalgona candy with all gujia, Uncle Chips, Rasgulla, and even a pulse candy, Dalgona candy. Now, I can't be sure how these items taste, but the videos looked amazing. The core point here is really that creators relied not only on their creative voice, but also on how their creative voice could tap into a cultural moment. But let me shift gears. Creativity in this new multi format world can come from a variety of places. And one of the defining themes we have seen is the growth of channels that tap into shared communities. In fact, some of the biggest creators today have been able to strike this balance of personal interest and channels that have a lot of people going deep into something they love and care deeply about. And this creates another opportunity for creators to think of themselves not in silos, but as members of a larger community or a tribe. My current obsession, if I'm being honest, is with channels like PJ Explained and Comic Verse, who are tapping into nerd culture and Marvel fandom and bringing it to the mainstream. Now, these channels signal the rise of professional fans as they upload a host of videos on the geek multiverse, be it with shorts trivia, episode recaps, deep dive podcasts, and more. And all these channels have seen a tremendous growth over the last year. And in fact, PJ Explained has recently crossed over 1 million subs. But communities don't always have to be broadly appealing, they can be specific too. A good example is the popularity of Telugu creator USA Raja, who uploads content about the NRI life in the US, appealing to millions of Telugu users in India who aspire to immigrate. And the thing is, his content touches upon every aspect of the NRI life, be it informative vlogs about his journey and path to the US, to utility shorts about basic skills like using an ATM or flying for the first time. And communities can be inspiring too. Take the case of recent creator on the rise, Atharva Agrawal, who is a second year MBBS student at AIMS New Delhi and has a growing channel filled with useful Q&A about the life of a doctor, motivational content for medical students, and many videos discussing the perfect preparation strategy to crack the competitive NEET exams. When it comes to active communities, there is no bigger one than the student community. Now, new communities like medical students and NRIs also brings me to my third point, which is really about newness and innovation. Because as we see a shift towards this hybrid and multi-format creation, we are also noticing the debut of brand new content formats that are thriving today. And this creates an interesting opportunity for creators to differentiate themselves almost as inventors and designers and architects of new content innovation. Take the case of mentalist and magician Suhani Shah, who has recently completed the third season of a widely popular live stream game show, That's My Job. In this game show, celebrity guests try and guess the profession of viewers through simple yes or no questions. Many of these live stream episodes, often 2 hours long, have crossed over a million views, and they create a unique interactive environment between the creator, the celebrity, guest, and her viewers who are playing the game show live in the comments every time. And remember those judges from Shark Tank earlier?
Well, they were on her show too, and they were pretty good at guessing the profession. आप पूछ लो ना एचआर. अच्छा पूछ सकते हैं. Are you an HR, Neeta? Yes. Yes. That's I my. know that feeling. That's my Oh my job. god. What is this? Yeah, this is not fun. That was the first thing I said, right? When she Yeah. came on. Yeah, that was the मैंने first thing आपको you देख said. के डिसाइड कर लिया था कि आप एचआर में हो. दिस इज लाइक. Mentalist कौन है अभी बताओ मुझे. So, in another word, let's look at innovation even within the world of shorts. When we often think about shorts, we think of singular videos, less than a minute long, often related to dance trends. But what if I told you that some of the most interesting new shorts are in fact a collection of many shorts stitched together that form multiple episodes of a web series? These shorts web series are another example of innovation where creators are tapping into our love for stories and web shows, but in a format that can be quickly consumed. For example, this web series by Girl Formula called Deskmates, which tells the unique love story of two office goers in a typical tech IT office in India. The whole story is told in over 8 different shots without any dialogues. Here's a look at episode 1 or short 1 of this web series. And innovation is happening even in the most unlikely of places: cricket gaming. My new obsession is watching a new breed of gamers in India like Pahul Walia, who live streamed cricket matches in Cricket 19 and 22 with all the drama and the commentary of a real match. बोले बोले कम ऑन पांड्या भैया, सब कुछ आपके हाथों में अब. शॉट शॉट शॉट, लुक एट दैट शॉट. ओह माय गॉड, scores are level. हार्दिक पांड्या लेजेंडरी शॉट. भाई मेरी धड़कनें रुक गई भाई. And that's not all. These creators are rebranding our favorite spectator sport with new video formats like entertaining shorts highlights, limited over challenges, and even full test matches live streamed over 11 hours on YouTube. And when it came to the World Cup, they replayed India's most popular matches, especially the ones with Pakistan and New Zealand, to take revenge on the ones that we actually lost. And when it came to the IPL last month, they streamed the same matches in parallel with the game on TV, creating this unique second screen experience. And since this is just a video game, some of them even upload shorts making fun of all the tech glitches in the game itself. कभी आज तक मैग्नेटिक हैंड्स देखे क्रिकेट में? आज मैं दिखाता हूँ. ये है एंड्रे रसेल के मैग्नेटिक हैंड्स. ऐसे कभी फील्डिंग करके दिखाओ तो मालूम है. And so, finally, to my last point today, we are living in a time where there is so much content, so many formats, and so many creators in India and in the world
This makes it hard to differentiate yourself as a creator today. But one thing we have seen is that a number of creators have found success by taking inspiration from popular formats and then mixing it with their own unique cultural take. Creativity today is really driven by mixing from your own culture and making content that is local and personal. And the opportunity is for creators to not only see themselves as YouTube creators, but also as creators who represent their own language and their own cultures. Take the curious case of this song, Tigini, which is a French song from the Ivory Coast, but it became a dance trend on TikTok globally. But in India, it became a way for creators to talk about their life by dressing up as their favorite local Desi memes. In a way, it's a short form meme made up of lots of other Desi memes. And we saw many cases of it. Some creators decided to dress up as their favorite Bollywood inspired meme. Sont pour déranger, fais les body sont pour danser, fais les body sont pour bouger, y'a qu'à tapiner à danser, ding. मुझे जाने दीजिए बाजी प्लीज बाजी मुझे जाने दीजिए Others decided to dress up as a meme of popular social media creators. Et ça va puissance absolue. Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe au haut. Tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. Fais les body sont pour danser, fais les body sont pour bouger. Y'a qu'à tapiner à danser. And some even connected our Indian weddings to memes from around the world. Sont pour déranger, fais les body sont pour danser, fais les body sont pour bouger. Y'a qu'à tapiner à danser. And there are thousands and thousands of more such shorts across languages and memes from around the country. But that's not all. This localization is even happening within India and within languages. So some of you might remember Badshah's Jugnu challenge that became a sensation for its dance moves. But did you also know that some of the creators in Tamil and Malayalam were able to adapt the trend and mix it in their own unique way? प्यार में चमकू जैसे जुगनू This doesn't mean we shouldn't participate in popular global trends. On the contrary, it creates the opportunity to interpret popular global trends with your own local twist and even the unique idiosyncrasies of Indians. So we all know that nosy neighbor or relative, right? This is how creator Rahul Lakhanpal interpreted a global trend with a very relatable twist. So, in sum, what's next on YouTube? As we see the evolution of the platform, we increasingly see a YouTube that will be made up of hybrid and multi-format creators who are able to easily and effectively use all formats of video to suit their needs, be it long form, shorts, live streams, podcasts, and more. And this new hybrid ecosystem is creating many opportunities for creators to tap into, be it by being trend spotters, by acting as members of communities and tribes, by innovating and inventing brand new content formats, and by differentiating through your own language and your own culture. To be honest, there is no
better time to be a YouTube creator than today. It's a wide open field for all of you to share your unique voice with the world in formats that suit you the best. And yes, I know, I'm sure there are still many friends and relatives who ask you every day, why do you want to be a creator? Why do you keep making these videos? Why don't you do something else with your life? And for all those naysayers, you can always send them this clip. अरे क्या करें सबकी आती नहीं हमें ही आती नहीं छोटी बच्ची हो क्या Thanks for all your time. I hope this was useful and all the very best for everything that you come up with. Awesome. Thank you so much, Yudhishthir, for sharing insights into those incredible trends. YouTube is perhaps the only platform where all these different formats can coexist and speak to one another. With that, I would like to introduce you to our next panel discussion, which is on YouTube Shorts. Let's learn how YouTube Shorts has impacted creators and how far we have come since the launch. Let me invite Astha, who will be moderating this session. She's a manager with Content Partnerships team and works with top Shorts creators. Over to you, Astha. Hi, everyone. Hope you're doing phenomenally well. Thank you so much, Nikhil. Delighted to introduce to you all our wonderful panel today of Shorts stalwarts who've made their way on YouTube with the amazing content that they've been putting out there. So without further ado, I'm going to introduce our four amazing panelists. The first one, Arvind from A2 Motivation, with 13 million followers and some amazing content on learning and motivation that he's been putting out there. Followed by Dushyant Kukreja. Dushyant has been sharing some trends and pranks on YouTube with another 14 million subscribers as well. We have some of the most amazing creators in the space of learning, which is Geet. She has a channel called English with Geet with 1.3 million subscribers on YouTube. And of course, Priyal Kukreja. We can see both the brother-sister duo here. But Priyal, on her own channel where she runs a lot of pranks and trends and also a little bit of lifestyle content, has about 6 million subscribers on YouTube. So welcome all of you, and so happy to have you here at the Shorts panel. All right, I hope you can all see all the smiling faces here. What I'm going to do now, creators, is I'm going to be asking some of you some interesting questions with which our audience that's present here can learn so much more. So my first question is going to be to Dushyant and Priyal. Dushyant and Priyal, my first question is, what inspired your journey on YouTube and what keeps motivated to even continue that journey? या श्योर सो सबसे पहले तो ये है कि जो यूट्यूब है जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हम जो वीडियोस बनाते हैं वो हमारा यही था कि हम शॉर्ट्स ही बनाएंगे जब जैसे शॉर्ट्स लॉन्च हुआ तो हमें लगा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो हमने ऐसी वीडियोस बनाई जो लोगों को बहुत पसंद आई जो लोगों ने बहुत शेयर करी और हम लॉजिकल वीडियोस बनाते हैं कॉमेडी बनाते हैं मोटिवेटेड भी बनाते हैं और हमारा अभी तक बस ये सपना है कि जैसे ही हम ग्रो कर रहे हैं साथ के साथ हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें और उसमें हम अपना बेस्ट देते रहें और रोज़ उठते हैं और कुछ नया सोचते हैं पुराना क्या हुआ वो भूल जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ स्टोरीज जो हैं वो बनाते रहते हैं मम्मी भी बहुत हेल्प करते हैं हमारी Absolutely. बहुत अच्छा लगा ये जान के. Geet, my next question is to you. What inspired you to start your YouTube journey? And आपको क्या motivated रखता है throughout to continue on YouTube every single day? तो actually मैं basically जब मैं videos नहीं बना रही हूँ मैं बस्तियों में जाती हूँ और बच्चों के साथ काम करती हूँ. तो जब मैंने videos बनाने शुरू करे just fun के लिए तब मैंने देखा कि जब मैं बस्ती में जाती हूँ मैं मे बी 20-100 लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकती हूँ लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ वही वीडियो हजारों लोगों तक जाता है तो आई रियलाइज कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पावर है खासकर शॉर्ट वीडियोस में बिकॉज सब लोग आजकल शॉर्ट वीडियोस को पसंद करते हैं तो इस तरह से फिर मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाना शुरू किए मैं इंग्लिश टीचिंग करती हूँ और मैं मोटिवेशन करती हूँ मोस्टली एंड देन
the thing that keeps me motivated is कि जब लोग मुझे positive feedback देते हैं, कहते हैं कि मेरे वीडियो के कारण उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया, वो इंग्लिश सीख पाए या वो मोटिवेट हुए किसी तरह से, तो डेली जब वो मैसेजेस आते हैं तो लगता है कि ठीक है, जो मैं कर रही हूँ उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है किसी को। And especially pandemic के during, it was really helpful because बस्तियों में तो जा नहीं सकती हूँ physically, तो वीडियोस बना के hopefully लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ। बहुत ही हार्ट टचिंग है गीत. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन, सो आस्किंग द पर्सन कॉल्ड A2 मोटिवेशन, अरविंद आपको क्या मोटिवेटेड रखता है हर दिन यूट्यूब पे अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और बाकी जो पैनलिस्ट हैं दुष्यंत, प्रियल एंड गीत, वो इतना मोटिवेटिंग काम कर रहे हैं कि हम लोग खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं. दूसरा 2013 से मैं यूट्यूब पे हूँ, और एक्चुअली मैं क्रिएटर बाय चॉइस हूँ, क्रिएटर बाय चांस नहीं हूँ. बिकॉज जब मैं यूट्यूब पे आया था तो मैं अपने लिए आया था, बिकॉज उस टाइम मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा था और रामानुजन के बारे में मैंने कुछ पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए. और तब मैंने सोचा कि वीडियो को स्टोर कहाँ करेंगे, अगर मैंने कहीं लिखा तो मैं भूल जाऊंगा, या पेन ड्राइव में रखा तो मे भी हो सकता है कि गुम हो जाए या कुछ भी हो जाए. सो मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पे उस वीडियो को डालते हैं, ताकि मुझे जब उसे उस मेथड को रिवाइज करना होगा या मुझे वीडियो दोबारा देखना होगा तो एटलीस्ट मुझे मिल जाएगा. तो इस वे से मैं यूट्यूब पे आया था एज अ क्रिएटर. मैंने अपने लिए वो वीडियो बनाया था. मैं जो भी अभी काम करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर्स हो. हमने जब A2 मोटिवेशन स्टार्ट किया था उसमें, बिकॉज पैंडेमिक के टाइम पे क्या हो रहा था कि बहुत सारे नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था. एट दैट पर्टिकुलर टाइम मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ पॉजिटिव चीजें स्प्रेड आउट की जाए, तो हमने ये A2 मोटिवेशन चैनल बनाया. उसमें हमने यही डिसाइड किया था कि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव फैक्ट और पॉजिटिव चीजें ही लोगों के सामने रखेंगे. सो फॉर्चुनेटली वो जो थिंकिंग था वो बहुत काम आया, और फाइनली यूट्यूब से हमें शॉर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली. एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोग हमारे शॉर्ट्स को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. बाकी बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, जो कि अपना शॉर्ट्स के थ्रू अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं. थैंक यू सो मच अरविंद. एंड बिकॉज हम लोग ऐसे राउंड रॉबिन फैशन में चल रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप ही से पूछ लेती हूँ. ऑफन टाइम्स वी ऑब्जर्व ऑन शॉर्ट्स कि फॉर्मेट्स चेंज होते रहते हैं. कभी कोई फॉर्मेट्स फेवरेट हो जाते हैं, जैसे मिनी ब्लॉग्स हो गए, रिव्यूज हो गए, कभी क्विजेस पॉपुलर हो गए. तो आपका फेवरेट फॉर्मेट क्या है, एंड हाउ डू यू एंश्योर टाइम टू टाइम यू कीप चेंजिंग दैट फॉर्मेट टू कीप योर ऑडियंस एंगेज? सो हाउ डू यू मैनेज दैट चेंज इज माई क्वेश्चन. ऑब्वियसली मेरा जो फेवरेट जो सेगमेंट है, फॉर्मेट है, वो शॉर्ट्स ही रहेगा. बिकॉज आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है. लोग बेसिकली चाहते हैं कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देख पाए और उन्हें समझ में आ जाए. स्पेसिफिकली वैसे तो जो लॉन्ग फॉर्मेट है उसकी जगह तो कोई ले नहीं सकता, बिकॉज आपको जब बहुत ही क्रिटिकल चीजें पढ़नी है तो आपको लॉन्ग फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 मिनट के से कम समय में कोई वो चीजें सिखा नहीं सकता है. बट हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम लोग छोटे फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्मेट में बड़े आसानी से बता सकते हैं. जैसे कि अगर स्मॉल स्टोरीज हो या स्मॉल फैक्ट्स हो या मोटिवेशन हो जिसकी वजह से मुझे नाम मिला, तो वो मेरा फेवरेट है. बिकॉज बहुत ही कम, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि शॉर्ट फॉर्मेट में कम समय लगता है. ऐसा नहीं है, बिकॉज आपके पास 60 ही सेकेंड होते हैं, और 60 सेकेंड में एक पर्टिकुलर चीज को अच्छे तरीके से बताना, उसमें स्क्रिप्टिंग में बहुत ज्यादा समय लगता है. बिकॉज उसके बियॉन्ड गए तो वो शॉर्ट्स में काउंट नहीं होगा. तो एक्चुअली समय कम लगने की बजाय ज्यादा लगता है, बिकॉज वहां पर सोचना पड़ता है कि स्क्रिप्टिंग कैसे की जाए. फिर उसके बाद जैसे मैं दुष्यंत की बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ कि इतनी एक अच्छी सी स्टोरी लाइन बहुत ही कम टाइम पे इतना इफेक्टिवली बता देना, रियल भी और गीत भी, वो बहुत अमेजिंग काम है. और मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ इन सब चीजों को देख के, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि 60 सेकंड से कम में ही अपनी बात कह दूं. तो ये मेरा फेवरेट है. और इसमें पर समय बहुत लगता है. शायद मैं नहीं जानता हूँ कि इन लोगों को कितना समय लगता है, बट मुझे एक शॉर्ट बनाने में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, जहां तक हमारी एडिटिंग टीम काम करती है और स्क्रिप्टिंग में जो वक्त लगता है वो इतना वक्त लग जाता है शॉर्ट्स बनाने में हमें. तो ये मेरा फेवरेट फॉर्मेट रहेगा हमेशा से, बिकॉज इसमें मेहनत ज्यादा है, बाय द वे, कम नहीं है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. गीत, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू दैट बिकॉज इट इज अ 60 सेकंड फॉर्मेट,
how do you ensure that you garner audience feedback and audience response? कैसे आप ensure करते हैं कि audience जो आपको feedback दे रही है, या आप काफी interesting formats करते हैं जैसे quizzes, and आप अपने जब shorts बताते हैं आप बीच में break लेते हैं, उनको आंसर सोचने देते हैं एंड फिर आंसर रिवील करते हैं कि इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। तो वो जो ब्रेक्स आप लेते हैं, आप इंश्योर कैसे करते हैं कि नेक्स्ट शॉट्स के लिए फीडबैक आता रहे एंड आप वो फीडबैक नेक्स्ट वीडियोस में इंप्लीमेंट करें? सो हाउ डू यू एंगेज पीपल and receive that feedback in such a short span of 60 seconds? Generally, different techniques use करती हूँ। कई वीडियोस में मैं शुरू में कहती हूँ आज आप लोगों के लिए एक सवाल है, आप कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, एंड फिर पहले मैं पूछ लेती हूँ जो मैंने पूछना होता है, फिर मैं बताती हूँ उसका जवाब। कभी कभी मैं स्क्रीन पे लिख लेती हूँ, छोटा सा कैप्शन बना देती हूँ स्क्रीन पे कि कमेंट्स में इस चीज़ का जवाब दीजिए, या इस इंसान को टैग करिए, या बताइए आपके साथ ऐसा कभी हुआ। कभी कभी मैं जो खुद के कमेंट सेक्शन होता है उसमें टॉप कमेंट में पिन कर देती हूँ एक कमेंट जिसमें मैं कोई सवाल पूछती हूँ कि कैसे बनाना चाहिए अगला वीडियो, या स्टोरीज में डाल देती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि किन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊँ, क्या आप क्या सीखना चाहते हो। एंड देन आई आल्सो लुक एट कि लोग क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं, बिकॉज जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि कभी क्विजेस, कभी शॉर्ट फॉर्म, कभी व्लॉग्स, कभी ये कभी वो चलता है, तो आई रियलाइज दैट आल्सो कि आप एक ही चीज़ नहीं बना सकते हो, आपको चेंज करते रहना पड़ता है, बिकॉज ऑडियंस की पसंद बदलती रहती है कि उनको क्या देखना है। जैसे बीच में मैं इंग्लिश सिखा रही थी लेकिन कॉमेडी वीडियोस के थ्रू, तो हम कॉमेडी, मैं और मम्मी कॉमेडी कर रहे थे और उसके थ्रू हम उनको कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश सिखा रहे थे, पर कुछ देर के बाद उन पे व्यूज आने बंद हो गए। तो फिर जैसे हम कुछ प्रोनाउंसिएशन के वीडियोस बनाने शुरू करे, 5-10 तरह के अलग अलग वीडियोस मैंने डाले, फिर देखा कि प्रोनाउंसिएशन पे व्यूज आ रहे हैं, तो ठीक है अब थोड़ी देर प्रोनाउंसिएशन वीडियोस बनाए क्योंकि लोगों को वो चीज़ चाहिए थी। फिर प्रोनाउंसिएशन पे बंद हो गए तो फिर मैंने एडवांस्ड इंग्लिश वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। तो ऐसे जस्ट देखना पड़ता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो और उस पे वीडियोस व्यूज आने बंद हो रहे हैं या कमेंट्स आने बंद हो रहे हैं, तो इसका मतलब ऑडियंस अब उस चीज़ से उनका मन भर गया है, तो कुछ नया ट्राई करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है गीत। एंड प्रियल एंड दुष्यंत, आपसे भी सिमिलर क्वेश्चन है कि आप अपने शॉर्ट्स के बारे में और लोगों को कैसे बताते हैं? लाइक अपलोड किया, मे बी सोशल मीडिया यूज किया, जैसे गीत कह रही थी वो स्टोरीज यूज करते हैं, आप कैसे बताते हैं? एंड ऑल्सो अगले ट्रेंड के लिए या ऑडियंस से फीडबैक लेने के लिए कि आप क्या हमसे जानना चाहते हैं, what are some of the best practices which you follow, which so many people who are watching us today वो भी इस चीज से सीख सकते हैं? पहले जब हम वीडियोस बनाते थे तब हम उनको रेगुलर ऐसे शॉर्ट अपलोड कर देते थे कि ये हमारी वीडियो है, हम इस 8 बजे अपलोड करेंगे सुबह। तो वो टाइम तब था जब बच्चों की छुट्टियां होती थी, हॉलीडेज होती थी। लॉकडाउन में हाँ, भी। लॉकडाउन भी था तो लोग उठ जाते थे। अब आजकल तो हम ये जब स्कूल लाइफ स्टार्ट हो गया तो 7 बजे ही उठ जाते हैं, 6 बजे हम ही नहीं उठ पाते। तो हमने अपना टाइम चेंज करा, फिर 2 बजे किया। अब 2 बजे फिर हमने देखा कि यहाँ पे थोड़ी हमारी रीच कम आ रही है, तो हमने रात को 8 बजे स्टार्ट कर दिया। और इससे हमें ये फ़र्क मिला कि जैसे रात को जब क्या होता है सब फ्री हो जाते हैं 8 बजे डिनर से पहले या डिनर के आसपास, तो ये हमारे लिए बेस्ट टाइम था, हम वीडियोस बनाते रहे। और अभी हमने स्टार्ट किया, हमने थोड़ा कंटेंट चेंज किया, अब हम शॉर्ट्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिससे एंगेजमेंट जो है वो बनी रहती है। और खासकर कि प्रीमियर हम वीडियो को प्रीमियर लगा देते हैं और एक दिन पहले ही लगा देते हैं ताकि जो एक कमेंट्स, सस्पेंस बना रहे। हाँ, एक सस्पेंस बना रहे जो हमारे नेक्स्ट पार्ट आ रहा है। और अभी हमने अभी सीरीज निकाली है, पहली सीरीज ही निकाली है, तो वो जो सीरीज है 1, 2, 3, 4 4 पार्ट्स में निकाली है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आई है। तो वो कहते हैं आप थोड़ी और मतलब एक जॉनर होता है कि आप स्केरी वीडियोस बनाओ, स्केरी कॉमेडी करो, तो हमें वहाँ से जो भी फीडबैक आता है हम उस पर काम करते हैं। कॉमेडी तो हम करते ही हैं, तो वो कहते हैं आप थोड़ा स्केरी भी करो, थोड़ा हमें देखना है कि आप स्केरी मतलब डरते हुए कैसे लगते हो, ये है वो है। तो हम कमेंट्स देखते हैं, जो मेजोरिटी होती है हम वो बनाने की कोशिश करते एंड हैं। मेनली हम लोग कम्युनिटी पोस्ट पे ही क्वेश्चंस पूछते हैं ऑडियंस से कि आप लोग क्या आप देखना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली अगर उनको मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल देखना है तो वही बनाते हैं, कुछ चेंज करने के लिए बीच में कॉमेडी बना देते हैं, तो मतलब ऐसे चलता रहता है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। काफी हेल्पफुल सजेशंस है हमारी ऑडियंस के लिए भी जो देख रहे हैं। अरविंद, अब आपसे सेम क्वेश्चन है कि आप अपने ऑडियंस से रिस्पॉन्स फीडबैक कैसे जनरेट करते हैं?
एंड ऑल्सो आपके आप उनको रिस्पॉन्ड भी कितना ऑफन करते हैं? इतने कमेंट्स आते हैं आपके वीडियोस में, तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आप ज्यादातर लोगों को रिस्पॉन्ड भी करें? बिकॉज इट कैन बी टफ कि इतने लोग कर रहे हैं, तो एंगेजमेंट बनाने के लिए आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, वो भी आप शेयर कीजिए। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम वीडियोस बनाते हैं हम लोग कोशिश करते हैं प्रीमियर के टाइम पे मैं एक्टिव रहूं स्टार्टिंग के 1 आवर, और जितने भी कमेंट्स आते हैं उनको हमारी तरफ से जो अच्छे कमेंट्स हैं उनको हार्ट दें, और जो फीडबैक्स हैं उनको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। तो पहला काम तो हम लोग ये करते हैं, एटलीस्ट 1 और 2 आवर मैं और मेरी टीम हम दोनों ये काम करते हैं। और सेकेंडली, जो भी कमेंट्स आते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि वीक में एक बार लाइव हो, लाइव में जाके उनके साथ इंटरेक्शन किया जाए। लाइव सेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बिकॉज इंटरेक्शन से क्या होता है, उनको फील होता है कि हम एक फैमिली का पार्ट है। बिकॉज ये सब्सक्राइबर्स बनाना बहुत आसान है, कम्युनिटी बनाना बहुत हार्ड है, और कम्युनिटी आपकी तभी बनेगी जब आप रिस्पॉन्ड करोगे उनके कमेंट्स को, या उनके साथ लाइव लोगे, उन्हें कुछ पॉजिटिव जो भी फीडबैक आते हैं या फिर उनका जो भी रिस्पॉन्स है उन्हें रिस्पॉन्ड करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह से हम लोग एंगेज करते हैं, और हम कोशिश भी करते हैं कोई अच्छा कमेंट होगा तो उसे हम लोग वीडियो पे पिन करें, स्टोरी के थ्रू उनके कमेंट को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं वो भी। और उसके अलावा जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी जाके हम लोग बोलते हैं कि आप एक बार इस यूट्यूब के वीडियो को देखिए, और अगर आप वहाँ पे जाके नीचे कमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हम आपके कमेंट को पिन करेंगे। और एक हम कभी कभार ये भी कोशिश करते हैं कि किसी एक लकी विनर का उनके यूट्यूब चैनल का प्रमोशन हम लोग संडे टू संडे जो लाइव सेशन होता है उसमें हम कर देंगे। सो इन 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 सब तरीकों से हम लोग एंगेज करने की कोशिश करते हैं, यही यही तरीके हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। गीत, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं, विच इज हाउ डू यू प्लान योर कंटेंट प्रोडक्शन इन एडवांस? हाउ like what's your schedule? How do you decide here are my production days, या ये मेरे next 1 month का content है, या ये मेरे next 6 months का content है? कितनी often वो production strategy आप change करते हैं या reconsider करते हैं? So production best practices, would love to hear some of those for you, because there are a lot of questions coming from the viewers regarding that as well. So मैं डेफिनेटली डेली नहीं शूट करती हूँ. आई ऑलवेज शूट इन एडवांस. मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे पास 1 month का कंटेंट एडवांस में रहे. अपलोड डेली करती हूँ बट कंटेंट बना के रखती हूँ. तो यूजुअली व्हाट आई डू इज कि पहले मैं लिखूंगी, मैं स्क्रिप्टिंग करूंगी, मे बी 5 दिन लेके मैं स्क्रिप्टिंग करूंगी सारी, एंड देन 1 या 2 दिन शूट के होंगे जिनमें बस लगातार सुबह से शाम 120 वीडियोस शूट करूंगी, या जितने भी वीडियोस मुझे चाहिए बस शूट करती गई. फिर उसके बाद एडिटिंग का काम चलता है. एडिटिंग का काम आपको काफ़ी टाइम लग जाता है. आई थिंक मेजॉरिटी टाइम या तो स्क्रिप्टिंग में या एडिटिंग में ही मेरा जाता है. एंड देन इट्स एडिटिंग, एंड सो आई बैच क्रिएट कभी भी. एंड देन साथ साथ में अगर कोई ट्रेंड चल रहा है जिस पे आपको हॉप ऑन करना है, या कोई वीडियो कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कमेंट्स में कि ऐसा वीडियो बना दो, तो वो मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ. बट आई ट्राई कि आई बैच क्रिएट. आई पहले स्क्रिप्टिंग कर ली, फिर शूट डेज हो गए, एंड देन एडिटिंग डेज, एंड देन अपलोड. बट ऑलवेज आई ट्राई कि एटलीस्ट 1 month इन एडवांस में कंटेंट बना के रखूँ. एंड देन ट्रेंड्स के लिए whenever the trend happens, तो उसके साथ आप चलना पड़ता है. बहुत ही इंस्पायरिंग है. एंड 1 month in advance, एक पूरा दिन शूटिंग का, देन इवन मोर एडिटिंग एंड 100+ वीडियोस. आई थिंक काफी लोग मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे आपके बात सुन के. दुष्यंत एज वेल एज प्रियल, आपका कंटेंट काफी ट्रेंड बैक्ड रहता है, एंड आप कई हद तक ट्रेंड फॉलोअर नहीं, आप ट्रेंड सेटर्स भी हैं यूट्यूब में. तो आपकी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी गीत की स्ट्रैटेजी से कैसे डिफरेंट है या सिमिलर है, इज द क्वेश्चन टू यू. मैं तो पहले बहुत शॉकिंग फील कर रहा हूँ कि ये एक ही दिन में 100 वीडियोस बना लेते हैं. तो हमारा होता ना, हम तो फिर पूरे साल का एक साथ बना के रख देते. वो हम परसों शेड्यूल, अगर हमने ज़्यादा वीडियोस बना ली ना, तो सच बता रहा हूँ हम हो जाएंगे आलसी. हम नहीं बना पाएंगे, हम एक दिन छोड़ देंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे. तो
आ रहे हैं, मतलब एक कप के ऊपर कप, उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक, ऐसे-ऐसे वो चैलेंजेस जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और जो मैंने ये देखा कि ये बहुत लोग पसंद करते हैं। तो धीरे-धीरे लोगों की क्या पसंद डाइवर्ट हो रही है, हम उस पर ध्यान करते हैं और एक सीज़न भी आता है, जैसे विंटर्स आ गई, विंटर्स के ऊपर हम वीडियोज़ बनाते हैं, फिर जैसे समर्स आती है, समर्स के ऊपर वीडियोज़, रक्षाबंधन पर 15 अगस्त मेनली रिपब्लिक जो डे। भी फेस्टिवल्स या ओकेजन्स आ रहे हैं उसके ऊपर भी शेयर करते हैं। सो आप अपनी नॉलेज को अपडेटेड रखने के लिए एंड अपनी टीम की नॉलेज को अपडेटेड रखने के लिए क्या-क्या एफर्ट्स करते हैं ताकि प्रोडक्शन रेगुलरली और एट हमारे जो कंटेंट होते हैं वो डेली बेसिस पे हैं। कभी कभार ऐसी स्टोरीज जैसे आईपीएल से इंस्पायर्ड, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल से इंस्पायर्ड बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो हमें बनानी पड़ती हैं। उसमें बहुत सारी मोटिवेशनल फैक्ट्स आते हैं जो हमें बनाने पड़ते हैं। तो पॉसिबल हमारे लिए नहीं कि एडवांस में हम लोग कुछ बना के रखें और पर हाँ, हम लोग जितने भी हमारी टीम है उनको हमने बोला हुआ है, क्योंकि हम लोग दिन में 3 वीडियोस अपलोड करते हैं। सो उसमें एक मोटिवेशन होता है, एक हेल्थ टिप्स होती हैं और कुछ करंट अफेयर्स होते हैं। तो हमें अपडेटेड रहना जरूरी होता है, एडवांस में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, हमारी टीम इस वे से काम करती है। थैंक यू सो मच अरविंद। कैन एवरीबडी हियर अस? हमारी ऑडियो स्टक हो रही है क्या? हम लोग की सबकी नहीं, सही है सब। एक है? ओके, ऑलराइट। मुझे लगा कि हमारी ऑडियो स्टक हो रही थी बीच में। थैंक यू अरविंद फॉर योर क्वेश्चन। एंड एक फाइनल क्वेश्चन है आप सब क्रिएटर्स हैं, उसके बाद हम ऑडियंस क्वेश्चंस कंसिडर करेंगे, राइट? ओके। फर्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रियल एंड दुष्यंत से स्टार्ट करते हैं। काफी हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता होगा तो कहीं ना कहीं वेल बीइंग इफेक्ट हो जाती है काफी क्रिएटर्स की एंड वो अपने आप को इनफ रेस्ट नहीं देते। सो हाउ डू यू एंश्योर दैट यू आर एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड मेंटेनिंग योर वेल बीइंग आल्सो? सो दैट्स द क्वेश्चन। मतलब कि हम थक जाते हैं, यही यही हुआ इसका मतलब, है ना? जी, कि हेक्टिक अगर शेड्यूल थक हो जाते जाता हैं तो रिकूप कैसे करते हैं अगले दिन फिर अपने आप को हैप्पी रहना और मोटिवेटेड करना? तो कैसे जो क्रिएटर्स थक जा रहे हैं वो कैसे अपने आप को नेक्स्ट डे मोटिवेट करें, अपनी वेल बीइंग कैसे रखें? सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस है जो हमें इतना मोटिवेटेड रखती है, हमें इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स मतलब हमें देती है कि हम आपकी इस वीडियो से इंस्पायर हुए, इतना मोटिवेट फील हुए। एंड ऑब्वियसली जब पेंडेमिक का टाइम था तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत डिप्रेस्ड थे लोग। तो ऑब्वियसली वो हमें जब ऐसे बोलते थे कि आपकी वीडियो देख के हमें बहुत ही अच्छा फील हुआ, लाइक कॉमेडी वीडियोस देख के हम इतना अच्छा फील हुआ, हम इतना हँसे। तो मेनली हमारी जो मोटिवेशन रहती है वो ऑडियंस ही रहती है कि वो हमें डेली इंस्पायर करती है कि हम कुछ नया लेकर आए उनके लिए। और हेक्टिक शेड्यूल होता है, मानता हूँ मैं कि वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना अभी तो हम खुद ही कर रहे हैं, कैमरा मैन भी हम खुद ही हैं। लेकिन कभी-कभी हो जाता है कि यार मैं कैमरा भी कर रहा हूँ, मैं एडिटिंग भी कर रहा हूँ। तो हमने अब यही किया हुआ है कि भाई ये स्क्रिप्ट ढूँढती है प्रियल और मैं मतलब एडिटिंग करता हूँ, ये करता हूँ। फिर भी हमें थोड़ा कभी ऐसा होता है हेक्टिक शेड्यूल है, तो इतनी भी वो कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, हम 1 दिन का ब्रेक ले लेते हैं ताकि मतलब ऐसा ना हो कि हम इस वजह से कुछ ऐसा कुछ डिलीवर करते हैं जो ऑडियंस को पसंद ना आए। तो हम ले लेते हैं 1 दिन का ब्रेक मैक्सिमम, तो उसमें हम रिकवर कर लेते हैं और इससे कुछ ऐसा नहीं होता कि आपका यूट्यूब डाउन हो जाएगा। मतलब ऐसा है कि बस आप बेस्ट दो अपना, वो बात है। थिंग इज कि आपको ये रियलाइज करना है कि आपकी हेल्थ कंटेंट क्रिएशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, तो हमेशा प्रायोरिटी उसको ही देना है, बिकॉज अगर तो मे बी 2-3 रीपोस्ट कर दो उस दिन कोई पुराना वीडियो या कोई ड्राफ्ट से कुछ निकाल के पोस्ट कर दो, इफ यू हैव टू। एंड अगर आप बिल्कुल नहीं पोस्ट कर सकते हो, ना करो। आई ऑलवेज मेक अ पॉइंट कि अगर मुझे ब्रेक चाहिए तो मैं ब्रेक लेती हूँ। एंड देन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपकी लाइफ में है, राइट? मे बी मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत मोटिवेशनल है, तो जब मैं डाउन फील कर रही होती हूँ, मे बी किसी का नेगेटिव कमेंट आया है, या यू नो चैनल इतना अच्छा चल नहीं रहा है, या जो भी रीजन है जिस रीजन से आप डाउन फील कर रहे हो, तो कोई एक तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में होने चाहिए जिनके पास आप जा सकते हो, जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो आपको समझाएंगे, जो आपको बिल्डअप करेंगे, एंड जिससे आपका दिमाग थोड़ा सही जगह पे वापस आ जाएगा। आप लोगों से बात करके मैं इतना इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ, एंड मेरे डे की इतनी बढ़िया शुरुआत हुई है कि आई थिंक आज की मेरी वेलबींग तो सॉर्टेड है। इसके बाद की मीटिंग्स काफी बढ़िया जाने वाली है। अरविंद, फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन टू यू, फिर ऑडियंस क्वेश्चंस लेंगे। आप अपनी वेलबींग का कैसे टेक केयर करते हैं, एंड सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए आई एम श्योर जरूरी है, आप 2013 से कंटेंट बना रहे हैं, सो हाउ डू यू मेंटेन दैट? मैं सच में बता रहा हूँ, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ पहला तो। और दूसरा, मैं खुद सोचता हूँ मैं इनसे सीख लूँ। मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या दूं, मतलब मैं खुद एक्चुअली बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ अपनी हेल्थ को, बिकॉज अभी हो क्या रहा है कि मैं सोशल मीडिया, बिकॉज मैंने कमिट किया है, मैं अभी थोड़ा नर्वस भी था आज, बिकॉज मुझे तो ये भी याद, मैं बहुत प्रिपेयर करके इस प्रिपरेशन कर रहा था इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, बट एट द एंड मैं खुद ही भूल गया कि आज मेरा सेशन है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए, बिकॉज अभी हो क्या रहा है कि यूट्यूब पे कंटेंट, यूट्यूब पे 3 वीडियो जाएंगी एक दिन में, इसका कमिटमेंट किया हो वो मुझे करना है, पर साथ में मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है अभी। एटलीस्ट अभी जो मैं ऑफिस में बैठा हूँ वहाँ पे 60 लोगों की हमारी टीम है। एंटरप्रेन्योर जर्नी मेरी स्टार्ट हो चुकी है, और रात कब हो रही दिन कब हो रही है पता ही नहीं लग रहा, सच बता रहा हूँ। और क्लैश आज इस वजह से भी हो गया था कि मेरा पैरेलल पॉडकास्ट था। तो हॉलीडे पे जाइए, फिर आप हॉलीडे शॉर्ट्स बनाइएगा, बट डेफिनेटली आप एक ब्रेक लीजिए। बाय द वे, एक छोटी सी चीज और शेयर करना चाहता हूँ। जो मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी है वो ऐसा नहीं था कि सेपरेटली स्टार्ट हुई है। दुष्यंत ने हमारे साथ कोर्सेज बनाए हैं, पर वो यूट्यूब की वजह से ही हुआ है, बिकॉज यूट्यूब ने जो पॉपुलैरिटी दी या जो सपोर्ट मिला है, जो ऑडियंस से जो सपोर्ट मिला, फाइनली हम चाहते हैं कि हम उन्हें वापस दें। तो ये जितना भी जर्नी अभी जी रहा हूँ, मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, 24 घंटे कैसे निकल रहे हैं पता नहीं, बट मुझे अच्छा बहुत लग रहा है। एटलीस्ट एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ। क्या बात है। थैंक यू सो मच क्रिएटर्स, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अभी हम क्या करेंगे, अभी बहुत ऑडियंस ने क्वेश्चंस शेयर किए हैं, तो मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके साथ मैं पूछती हूँ, एंड देन वी विल रिप्लाई। तो हमारे ऑडियंस में अभिषेक चहर नाम के व्यूअर हैं, एंड उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ ऑफन शुड आई मेक शॉर्ट्स वीकली
so that my engagement is up to date? So how many shots would you recommend that he should make on a weekly basis? कोई भी जो भी आंसर करना चाहे कर सकते हैं. मैं बोल देता हूँ जितने वो मतलब रेगुलरली कंसिस्टेंटली गो अहेड. चलो आप हाँ जी बोलो. हाँ जी हाँ जी. आई वुड से कि Okay, जितने भी Geet, आप go for it. रेगुलरली Yeah. कंसिस्टेंटली बना सकते हो, जो भी आप कंसिस्टेंटली कर सकते हो ना, आप वो करो. अगर आप एक पर वीक बना सकते हो बट वो हर हफ्ते आप डाल सकते हो, वो डालो. बट कोशिश करो कि आई मीन आई थिंक बेस्ट इज अगर आप डेली एक डाल सकते हो, बट जितना भी आप कमिट कर सकते हो. क्या बात है. इसमें कंसिस्टेंसी एक Agreed. बात है कि हर इंसान के लिए आप जो हर हफ्ते कर सकते हैं वो जरूरी है. एंड दुष्यंत, आपका क्या कहना है? मैं भी यही सेम कहना था, जितना आप कमिट कर सकते हो. ऐसा ना हो कि आप पहले महीने 3-3 डालो, फिर उसके बाद 1 डालो, फिर वो जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं रह पाएगी. जितना आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हो ना कि मैं 1 दिन में 1 कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म जितना हो सके, तो वो हिट करो. Got it. And I think हम ये डिस्कस कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, बट अरविंद, डायरेक्टिंग दिस वन टू यू. शक्ति प्रभाकर हैं वन ऑफ आवर व्यूअर्स, एंड वो पूछ रहे हैं कि कई बार ऑफ कोर्स अगर आप मल्टीपल शॉर्ट्स अपलोड करो एंड लॉन्ग्स भी कर दो तो नोटिफिकेशन नहीं जाती है कई शॉर्ट्स की, बिकॉज एल्गोरिदम व्यूअर्स को ऑफ कोर्स डिस्टर्ब नहीं करना चाहता उतने ऑफन. तो और क्या बेटर तरीका है अपने ऑडियंस को अपने अपलोडेड शॉर्ट्स के बारे में बताने का? एंड आई थिंक आपने सोशल मीडिया की पहले बात करी थी, आई थिंक फिर क्योंकि क्वेश्चन आया, फिर से एक बार उस चीज पे एम्फसाइज कर सकते हैं हम. तो हम और हमारी टीम क्या करते हैं, जब भी जैसे ही वीडियो अपलोड होता है, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको वो सीधे डायरेक्टली बताता हूँ. आप इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, आपके फेसबुक पेज पे शेयर करिए, स्टोरी पे डालिए, यूट्यूब की स्टोरी पे डालिए. आपके पास कम्युनिटी भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप उसे शेयर कर सकते हो. तो ये सारे मीडियम है. इनफैक्ट अगर आपके पास ये सब पेजेस इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टेलीग्राम नहीं है, जहाँ पे आप अपने यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए ऑडियंस लेके आ सकते हो, आपको बनाने चाहिए. और इनफैक्ट ये हमें कहीं ना कहीं फेवर करता है, बिकॉज हम जब भी कोई शॉर्ट्स अपलोड करते हैं उसे हम अपनी तो ये भी आप कर सकते हो. थैंक यू सो मच अरविंद. एंड अब किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मुझे मेरा ऑलरेडी लॉन्ग फॉर्म चिराग है, इनका ऑलरेडी लॉन्ग फॉर्मेट का चैनल है, बट ये काफी सोच रहे हैं कि ये शॉर्ट सेम चैनल पे बनाएं या अलग पे. ना वाइल हम गाइडेंस देते हैं कि होना चाहिए कि आप सेम तरह का कंटेंट बना रहे हैं तो आप सेम पे भी बना सकते हैं, बट आप लोग क्या एडवाइस देंगे उनको कि वो सेम पे बनाएं या अलग चैनल बनाएं अपने शॉर्ट्स वीडियोस का? गीत, आपको ये क्वेश्चन है. मैंने एक्चुअली सेम चैनल पे दोनों चीज़ें की है. पहले मैं लॉन्ग फॉर्म बनाती थी और फिर मैं शॉर्ट्स बनाने लगी. अब मैंने देखा है कि शॉर्ट्स बनाने से मेरे एक्चुअली लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी ज़्यादा चलने लगे. जैसे मैं शॉर्ट्स बनाने लगी, शॉर्ट्स थोड़े से चलने लगे, तब मैंने देखा कि जो मेरे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस है उनमें भी व्यूज़ एकदम से बढ़ने लगे. सो फॉर मी आई फाउंड बिकॉज मेरा ओवरऑल टॉपिक सेम था. इट्स नॉट कि मैं शॉर्ट्स कॉमेडी की बना रही हूँ बट लॉन्ग फॉर्म में मोटिवेशन कर रही हूँ. सब कुछ मोटिवेशन ही था. सो इट मेड सेंस कि एक चैनल पे ये सब कुछ कर सकती हूँ. अगर आपकी शॉर्ट्स टोटली डिफरेंट टॉपिक पे हैं देन मे बी आप कंसिडर करोगे कि आपको दूसरा चैनल बनाना है. बट या मेरे लिए तो एक्चुअली मेरे लॉन्ग फॉर्म को बेनिफिट करा मेरी शॉर्ट्स वीडियोस ने. थैंक यू गीत. एंड प्रियल एंड दुष्यंत, आप क्या उनको रेकमेंड करेंगे? जैसे कि गीत ने कहा कि अगर आप सेम तरह का कंटेंट बना रहे हैं तो गीत ने तो सेम चैनल पे कंटिन्यू किया, एंड आप क्या चिराग को क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस टाइम पे? मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो शॉर्ट्स है वो भी टेस्टिंग वर्जन में है. शायद अभी भी बीटा वर्जन आता है ना उसमें, शॉर्ट्स में जब हम अपलोड करते हैं. तो मेरे को ये सिर्फ लगता है प्रोडक्ट्स, कि सिर्फ न्यू अपडेट्स के लिए. हाँ, तो मेरे को ये लगता है कि अब शॉर्ट्स सबको का अवेलेबल है, एवरीबडी हैज इट. हाँ हाँ हाँ. शॉर्ट्स का चैनल अलग होना चाहिए, मेरे को ये लगता है, क्योंकि बिकॉज लॉन्ग फॉर्मेट का एल्गोरिथम अलग लगता है और शॉर्ट्स का अलग लगता है. तो इससे दोनों के जो कॉम्बिनेशन
है वो क्या रहेगा क्या नहीं, इसलिए मैं अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियोस कम डालता हूँ। मैं अपने शॉर्ट्स अलग चैनल ज़्यादा पे देखते हैं। दूसरे चैनल पे लॉन्ग वीडियोस ज़्यादा डालता हूँ। तो अभी मैं इसमें कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मैंने इतना कुछ गेन किया, लेकिन मेरे को ये लगता है तो मैं ये कह सकता हूँ। गॉट इट। हाँ जी। गॉट इट। बेसिकली दोनों बातें हैं। इसका जो हम गाइडेंस है वो ये देते हैं, चिराग एंड आई कैन आंसर फ्रॉम वाइल बीइंग इनसाइड द लाइक वर्किंग एट यूट्यूब। जो गीत ने कहा वो भी बिल्कुल ठीक है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेम है कि आप लर्निंग कंटेंट बना रहे हैं या आप गेमिंग का बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी का बना रहे हैं और सेम ही कंटेंट पे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली बना सकते हैं। बट अगर आप अपनी पर्सनैलिटी का न्यू एस्पेक्ट एक लॉन्ग फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं पर आपका शॉर्ट्स कंटेंट उससे थोड़ा अलग है, तो जैसे कि दुष्यंत प्रियल ने किया आप वो कर सकते हैं। आपको बस अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि मैं इस चैनल पे एक्स करता हूँ और शॉर्ट्स पे मुझे वाई करना है। तो ये एक्स और वाई आप डिफाइन कर लीजिए। अगर वो दोनों सेम है तो आप सेम चैनल पे कंटिन्यू कीजिए, और अगर उन दोनों पे आप एक अलग पर्सनैलिटी और खुल के दिखाना चाहते हैं तो फिर आप वो चीज कीजिए। विथ दैट आई थिंक हमारा टाइम अब रैप अप करने का हो गया है। बिग थैंक यू to all of you. Thank you Arvind, thank you Dushyant, thank you Geet, thank you Priyal. इतना अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड आवर ऑडियंसेस और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बट हमारा टाइम थोड़ा कंप्लीट हो गया है। फोक्स आई एम श्योर आपने सब्सक्राइब किया होगा, बट प्लीज सब्सक्राइब टू ऑल देयर चैनल्स। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है आप कमेंट कीजिए, हमने सुना वो अपने कमेंट्स के लिए डेफिनेटली हर कोई रिप्लाई करते हैं। आप अपने क्वेश्चंस डेफिनेटली उनके साथ भी शेयर कीजिए। Thank you so much. I now hand over to, thank you folks, thank you so much. And I now hand over to Thank you my so much. colleague Nikhil to take this forward. Thank you, Arvind, Dushyant, Priyal, Geet, and Asta. I hope this inspires you to get started with shorts and experiment with the product. Moving on, have you ever encountered a problem on YouTube and did not know how to go about solving it? We have Vesh from our scale support and education team to show you what to do. Over to you, Vesh. Hi everyone, I'm Vaish, the Community Manager for India from Team YouTube. We work closely with various YouTube teams to share the latest updates with you. We also champion creators' feedback within the company. Today, I'll be running through all the various ways you can get help from us. This includes our help centers, help communities, YouTube channels, Twitter, and the YouTube Creators site. If you are in the YouTube Partner Program, you will also have access to email and chat support. Everything I cover in this video will be linked in the description below. So what are all the ways you can get support? If you are a monetizing content creator as part of the YouTube Partner Program and have a technical issue or support related question, you can contact the Content Creator Support team via chat or email. If you are not yet part of the YouTube Partner Program, you can start by visiting our Help Center, which is localized in 41 different languages, including Hindi. There, you can find help articles and community posts with answers to many common questions across many different categories related to creating an account, watching and uploading videos, maintaining your channel, policy and community guidelines, and much more. If you can't find what you're looking for in the Help Center, you can post your question in the India Help Community, a peer-to-peer community for users and creators to exchange tips and ideas. We have an amazing community of product experts on the forum who will help answer your questions and queries. While you're at it, visit the YouTube Creators India channel on YouTube for official updates, news, and education from YouTube. You'll also see videos from video contributors, your fellow creators, who create video content that cover all things YouTube. Check them out on the playlist here. Don't forget to subscribe to the YouTube Creators India channel and our video contributors channels. On Twitter, you can find us at Team YouTube. If you have any questions, you can tag us there at Team YouTube. Make sure to include channel or video URLs and screenshots if you have them. We currently support English, French, German, Portuguese, Russian, Spanish, Japanese, and Bahasa on Twitter. And last but not least, we have youtube.com/creators for all the information you need to create on YouTube. And that's it. We hope that this helps you and wish you the very best on your creator journey ahead. Thanks for watching this video. Superb.
I hope everyone is now able to leverage our scale support mechanism to solve their problems as quickly as possible. All right, it was a packed first half. Let's take a quick 5-minute break so that you can stretch out, get some rest, get some snacks and drinks. Let's come back for our next panel. For those who want to hang around, we have another round of our shorts compilation. I hope you enjoy those entertaining shots. See you in 5 minutes. Cue video. बात छोरा करता फेस पे है पिट
to the next segment of Creator Camp. How's everybody feeling? Do let me know in the chat section. The second half of today's camp is all about learning from some of your favorite creators. You have learned about great content ideas from our trends team, understood innovative short strategies from the panel discussion, and now you are on to figuring out how to make your YouTube channel a more sustainable business. To help you brainstorm on long-term sustainability, we have Ishita from the partner development team, along with panel of talented creators. Over to you, Ishita. Ishita, go. Hello, everyone. Welcome to the YouTube Creator Camp. I've been having some wonderful conversations with a bunch of you over the last few hours. So thank you so much for joining in. I'm really excited to welcome our next set of panelists. We're going to be talking about sustainability on the platform, which is a very, very important topic. And a lot of you have been asking questions regarding that in the chat as well. So I'm going to give some of these creators an opportunity to share their journey with you so that you can learn directly from them. Joining me on the panel today are three amazing creators. We have Aishwarya here from BuzzFeed India. Aishwarya currently leads the video team at BuzzFeed, and she's also behind the creative strategy and production of the videos that you often see on their channel. She's also passionate about diversity and inclusion efforts within her company, which is something I'm personally passionate about as well. So I'm really glad that she's here to share some of her great advice with all of you. We also have Anshul here from Logical Banya and Mind Your Logic. Prior to YouTube, Anshul was actually an investment banker, and he started this channel as a weekend activity that he enjoyed to do in order to solve his passion or find a way to share his passion for solving riddles, puzzles, and brain teasers. But today on YouTube, he has over 15 channels in 7 different languages and over 12 million followers collectively. So he has definitely built his business and can share a lot more about how he has managed to, create this sustained business on YouTube. And lastly, we have Nick. Nick rarely requires an introduction, especially for those of you who are from Mumbai. Nick obviously wears many hats. Personally, I've seen him do multiple different things. He's a YouTuber, content creator, a writer, an actor, a director, a guitarist, a songwriter, and a lot more. The list could go on. I'm going to let him share a little bit about his journey with you through this panel. And at this stage, I'd love to invite all three of them on so that we can get kick-started. So welcome, Aishwarya, Anshul, and Nick. So happy to have you on the panel today. Thank you so much for taking the time to join us. We're really, really glad that I hope you all can hear me fine. Yeah, hi Ashita. It's really amazing to be here and impart some knowledge that I might have maybe. Amazing. I'm sure that you have a lot of knowledge to share with folks on the live stream, because a lot of them have been asking questions that pertain to all three of you. So I will definitely make sure to surface those as the session goes about. But just to get us kick-started, one of the most important things about sustainability, and a couple other folks on the live stream have also asked this question, and I'll maybe start with you, Aishwarya, since I see you first on my screen. How do you often plan your content and consistency on YouTube? Because content planning definitely does take a lot of effort, and a lot of people tend to do it last minute. How do you tend to plan this in your mind? Yeah, actually, when you talk about consistency, there's like different kinds, right? You could be consistency in schedule, there's consistency in like formats or personality, tone. With BuzzFeed, we've seen that in terms of sustainability, consistency in schedule and brand voice or the tone has helped us the most. And I can give some tips on like how you can schedule better or be consistent with your schedule. And it's just one thing you need to figure out is first, like what resources do you have today to carry that into the future, right? You can't plan things based on what I might have in the future, like the equipment I'll have, or if you're like a dance creator, if you need a studio, like, how many times in the week can you get the studio? Once you figure out like what your 100% is, and by that I mean like how much can you produce and publish, say, in a month, and your 100% is like 8 videos, I would say, and this is something that we follow a lot, is just deliver about 80% of it and then bank the 20%.
because there is going to be a rainy day, one day where you probably either haven't had a video that's been edited and it has to go up that day, or your 4G isn't working, your Wi-Fi isn't working, something goes wrong. So you have something in store or something in the bank that you can give your audience at the time that you usually upload videos. But I would also say don't overdo it, because I've heard people say that, okay, if I can like bank videos, why not bank, like, you know, if I do 10 videos, why not bank 5 of them? The problem with that also becomes is more often than not, your content could go stale in the bank. Or the other thing is, if y'all are creators that are just emerging, you are growing your audience, right? And the audience is going to give you some feedback. They're going to tell you how to improve your work. And if you have those, you know, 5 videos already produced and you've put the effort, you're not going to be able to modify that and upgrade it to what your audience wants. So you have to be smart about it. So I would definitely say, like, have a bank there, just so that it gives you more room to improve and also more room to like experiment with things eventually. And with brand voice, like consistency and that, I would definitely say that there are two things, right? The creative aspect is, what are the kind of topics you want to talk about? What do you want your channel to be represented? You know, what do you want your channel to represent? Things like that. So once you have that, once you know who you are, you just have to do that repeatedly, and you have to kind of drill it into the audience that this is what, you know, is associated with the channel that you've created. And from a technical aspect, I would say, you know, have a style guide. So just have certain like graphic elements that just that are associated with your video, and not just within the video, but also like your thumbnails, your titles. Like these things will have like brand recall. Like I personally have started following a creator who puts emojis in the title. And I know that whenever I see those emojis in any title, even if it's not that creator, I'm thinking about that creator, oh, maybe this video is by them. So eventually it just creates a lot more brand recall and just like recognition, right? So I would definitely say these are like certain things that you can do to maintain consistency. That's amazing insight. Thank you so much for sharing that. I genuinely believe also one of the great points that you mentioned was being able to deliver what you can, not overcommitting to, you know, pushing out more content than you're able to at this stage in your career. And that's perfectly fine. So even if that's 8 videos in a month, that's more than enough, as long as it's done in a way that makes sense for the audience. That was great advice. Thank you so much, Aishwarya. Moving to you, Anshul, similar question. Do you have any strategies apart from what Aishwarya spoke about when it comes to planning out your content in advance or having some level of consistency across them? So Aishwarya almost brilliantly answered all the points. So we almost follow the similar strategy. So because we have multiple channels in multiple languages, so even we keep a bank, and we have at least 4 to 5 videos at least ready in advance, because you cannot predict whatever happens to your hardware, your system may crash. So we make sure as well the videos are uploaded on the YouTube platform and they are private. So even from the mobile, we can upload that video whenever we have the access for it. The better is to schedule, but if you want to do a cross-check, over the monetization and everything, so we keep it private. So that I can add more on the Aishwarya. That's a great production tip. Personally, I also would recommend scheduling your videos in advance if it makes it easier for you to, you know, put it through review, even if it's just copyright review or policy review. It's a great way to just unlist your videos and post them in advance so that at the time it's like, no, we don't have an issue. Thank you so much for that tip. Actually, that's a brilliant production tip. Nick, coming to you. I know that over the years, your upload strategy has changed with time. How do you currently plan your content, especially since there are so many different kinds of content that go up on the channel? Can you shed a little bit, some light on, you know, how to plan out your schedule? I mean, to be honest, I don't know what bank these guys are talking about. I need to take a loan to like produce one. But we have never like overdone stuff. It's just you know, we are turning 9 like probably the next month. So it's been 9 years that we are doing this, and I've always believed that I started doing it because I love doing it, right? So for me, it's never about any strategy. It's never about, okay, what are people going to like? Okay, this is the trend that's going on. I think we need to do some stuff around this. I think we need to study what our audience like. I feel for me, even making content, even uploading them or anything,
relates around how much fun are we having while doing it, A, and B, it's about whether you like it or no. Like for me, my content is whether I would watch this piece of content and laugh irrespective of the fact that I'm in it. Yes or no? That's a plain question, plain answer. Just upload it. And apparently, I've realized that there's a lot of people who think like us. There's a lot of people who like stuff that we like. So there's no plan. In fact, we sat together to make a lot of plans, and you know, I'm still not working on it. So it's just I feel a lot of people who are new or who are trying to do this get so much into like I'm sure BuzzFeed started planning stuff out off lately. Like now, I'm sure they did not start with like, oh, we're going to put 4 videos a month. So a lot of people get into that so much that they forget why they're doing it. Like for me, I feel that I'm doing this because I don't want to do a job. And if I'm so much into it that I have to regulate and it's creative, right? It's not something that you can sit and type. So I feel if I'm so stressed out about posting a video a week that it feels that I'm doing a job, then I might as well do a job and not do this. You brought up a very important point about passion. I think with time, I think people get in the race of it all, the numbers of it all, as opposed to trying to remember why you got started in the first place. And so it's a very, very important call out to ensure that your passion still shows through, because it does show through in the camera as well when you end up posting content or when you upload videos on the platform as well. So follow your passion. While that sounds cliche, it is very true and very real of what we see from creators on the platform who've been around for a while. So thank you for sharing that. Words to live by. Awesome. Actually, to follow through on that question as well, another question that we received in the chat by a few folks actually was how to a large segment of being sustained on the platform comes with building the loyalty and that fandom with your audience as well. So how do you create loyalty? How do you interact with your audiences, engage them in order to ensure that you have a relationship that will be sustained with them for a long period of time? I think we can start with Anshul. So what we do is, so comment is a very important part. So we try to make sure that we always reply on the comments. So whatever comments we get, we reply on that. So ours is a riddle and puzzle content. So generally there will be a lot of comments and we try to understand what kind of riddles or puzzles people are not understanding or what's a difficult or easy one they are getting. So depending upon that, we reply them, we give them more explanation on the comment section. And similar thing we do on the community tab as well. So we use a lot community tab stories. We use a lot. So we try to solve because it's all around the logic building and the brain development. So to try to make sure that whatever we are posting, the users will understand what we are trying to tell them or what we are trying to take the video on. So for that, we try to use as many things as possible that YouTube provides us. That's a great call out. I personally also really enjoy the comment section. I think it's such a nice, lightweight way of sort of engaging with your audiences and ensuring that there's some level of two-way conversations that you can have. You can always leave likes or pin comments to show your support to your audience. And that really keeps them going and motivates them to leave more comments for you as well. So thank you for that. Aishwarya, over to you. Are there any products or any formats of content as well that you explore when it comes to engaging with your audiences? I think rather than answering with formats and that side of things, I would say a lot of times when I see content creators kind of humanize themselves, when you make mistakes and you go along with making fun of yourself in a way, I feel like it connects with the audience the most because it does help in creating a loyal base. They feel like they're actually part of the community and they aren't just viewers, right? So I feel like using, like Anshul said, using the community tab or pinning comments and YouTube stories, these are great ways of just interacting with the audience. So often, like I spoke about consistency and schedule, right? So sometimes you just can't probably publish that video that has to go up Friday night. And a lot of people stress about it and they're just oh my God, what do I do? But
more often than not, if you don't upload that video, the answer is the world isn't going to end. Like, it's fine. So like you would do to a friend, right? If you do schedule something with a friend, like, hey, can I have dinner Friday night? And you're unable to make it, you'll call the friend and say, hey, I can't make it on Friday night, but you'll be a good friend and reschedule it and say, does Monday work? Similarly, you talk to your audience. You're like, I can't make it, like, this video can't come up on Friday night, like I promised, but hey, what do you guys think about like Monday? And there are like, YouTube has given such great tools to have polls and things in the community tab to understand that. So I think just humanizing yourself and being a relatable content creator beyond just creating relatable content really helps build that loyalty. That's a wonderful call out. That's one of the major reasons why I love when creators are super active in the comment section, or even drop very candid responses in community saying, hey, how's your day going? There are lots of creators who do that just to have a very casual interaction with their audiences, and I see a lot of fandom being driven through that initiative because of that relatability. So great comment on relatability. I completely agree with you. Moving to Nick, I know Nick is somebody who will literally take a picture with anybody. So if you stop him if you find him in Bombay somewhere on the road and stop him, he will take a picture with you. So he loves doing that. Nick, do you have any words of advice when it comes to like audience interactions? Because I know that you've had a lot of them. I think like the most important thing here is to be true to them. Like, I think they would understand when you're faking it and when you actually believe in, like, I've seen a lot of people who are like, hey, I'm doing this for y'all, and I'm not someone who would do it. We make stuff which are like very relatable, which happens in your day-to-day life. So for us, it's like, oh, has this ever happened to you? And then they start telling their stories, and then I meet somewhere around like 100, 200 people a day outside, and just be nice to them, be true to them, and I truly feel that we are here because of them, and like I don't think we are anywhere. So I don't call them fans. It's just like people who watch me. They're just like any other friends that I have. And yeah, I mean, comments, I think they've covered everything. Like, you should reply to them on comments. I replied to a lot of DMs too. And then just community tab is a great option now. Like now that we've started doing a lot of other things. I've got a vlogging channel too. For me, this is to kind of show them how I live my life, and kind of like, a lot of people are in those vlogs because they meet me, and I'm like always with the camera now. So yeah, to sum it down from the thing that they have said, I guess you should be true to them. It's like the one line answer that I can say here. Yep. Thank you for sharing that. I think being true to them, giving back to the general community is always really nice because they really appreciate it. And it's also a great way for you to connect with them on a more personal level rather than just behind a screen. So great advice for anyone who has a fan, walk up to them, or a viewer, walk up to them, not a fan, and ask to take pictures or just ask to hang out or say hi, whatever that may be. Awesome. I've seen this, like, in the past, like it's been 9 years that we are doing this, right? So I've seen a lot of, say, Bollywood celebrities going out and a lot of YouTubers going out. We've been reached out the most because I think we are more approachable than them. It's not like anybody's up or anybody's down there. I guess that's the difference that all the YouTubers have created, that I think if they see me, they don't see, hey, that's Nick, that's a star. They see, if this guy's done it, I can do it too. Like, I'm still standing there at that chai tabri having chai, and they're like around me. So if they feel that if this guy's done it, we can do it too. I agree with that sentiment. I think there's a big conversation around relatability that comes with being a YouTuber, and there's a lot of moments that you share that are unfiltered, like Aishwarya mentioned as well, that people connect with at a very personal level. It's almost like they see an element of themselves in you, and so that really brings the community together even further. So great point about relatability. Also, I think that people often give you great ideas as well for your videos. When you talk to them, like Nick said, like when you talk to them, they tell you their experience, and then you realize that, oh, I relate to this as well. This could be a great video. So it's really nice to just open that conversation and have that. So yeah, but I do want to learn from Nick how to be more approachable, because I feel like people think I'm intimidating. So yeah, I need classes on that.
Yeah, okay. We'll connect you two offline to definitely chat a little bit more about this. But no, it's actually a great point. I think a lot of folks in the chat box were also asking, what's a good time to upload content? What kind of content should I upload if I'm an educational creator, a vlogger, or in the food space? I think having a loyal and engaged audience really helps you get advice directly from them, and they are more than open to sharing their their insights with you. In fact, they like to be part of the planning session. It's almost like, hey, I recommended that topic to that creator, and so they feel like they should come and watch you, engage with you, because they feel like they've contributed something beyond just viewing your content. And so it's a really, really big part of being a YouTuber. And thank you so much for sharing those insights. I think they're all really brilliant and very very relevant for a lot of the questions that have come through as well. Just for my next question is mostly around content strategy. I know we receive a lot of questions about this. Should I just stick to one kind of content? Should I be spinning off to doing other things on YouTube? Coming back to you, Aishwarya, I think personally, being a viewer of BuzzFeed, I've seen BuzzFeed India, experiment with an array of content over the last year and a half, spanning entertainment, food, beauty. You've even covered like social issues, current affairs. So big spectrum of content on your end. Why is it so important for you to keep experimenting with content? Here I would say there are two reasons that why we do that. Is one is, even though one kind of format or content has worked for us, like a series, we have noticed that after a point, there is some audience fatigue to it. So initially the audience is very much like, I want to see more of it. And then they reach a threshold and they expect more, which is fair. Like they expect more from like whoever they've subscribed to. So I think that is one thing, like just figuring out that your audience is not just one thing, right? So if we do makeup content, yeah, great. Even I'm a person who loves makeup, but then I'm also a person who might like something else. So you kind of need to figure out that, if you are someone who has so many interests, your audience also does have those interests, and you can expand. The other reason is to evolve and expand your audience base, right? So if you're just targeting one niche, then you're going to keep it very restricted and you're not going to grow as much. But if you, try and figure, like I said, makeup is as an example, if I'm only doing makeup content, then it's only going to be like one part of YouTube. But maybe I'm like, what, maybe the people will like some fashion content. So let's just tackle into people who like that. So you're bringing in more people into your community. So I think these are the two reasons why we've been trying to figure out as well. And sometimes when you're a new creator, like we are not, but whoever's a new creator, you just like try different things and figure out like what sticks and what you feel works for you and the audience as well. So I think that's why it's important to just, experiment and figure things out. Two great points then. One about experimenting with content, and two about, expanding your current audience space, because audiences are always evolving. Their, interest in content is always evolving. And so not being afraid to experiment with new things is definitely a great takeaway here. Anshul, for you, just switching it up a little bit, in your introduction, we spoke about, how you have over 15 channels that you're currently running in over 7 different languages. When did you, think about expanding your business to cover this array of content on YouTube? And, what made you want to spin off into offering content in different languages on the platform? So it just happened by chance. So one of our follower, so he was from Kerala and he understands Hindi. So he dropped me an email, sir, that my friends and everyone like your content a lot. So can I upload the content in Malayalam? So I thought that people, even in the Kerala, people loves the content. So I talked to him. We discussed over the phone. So user engagement. So it really helps. So he helped me to create all my content in Malayalam, and for us it worked. So within a month, we reached 10,000 subscribers. That time I realized that if it's working in Kerala, it would work in every part of India. So then we tried to figure out the languages, which are the major languages other than Hindi, which are spoken in India. And then we started creating content in Tamil, Telugu, Bangla, Marathi, Gujarati. And that's how we expanded in all the languages. Amazing. Have you seen any benefits of expanding into all of these languages? Yeah, definitely. So almost all our channels now have 5 lakh plus subscribers. So it's expanding in all the regional languages. And plus we have a brilliant reach.
So it's very easy for us to impress the advertisers that for us, we can get reach in every corner of India. That's easy. Plus, we create games as well. So while expanding the business, we realized that our characters are getting popular. So we started creating games on our characters. And so because now we have a reach across India, we have reach in almost all the languages. So we are able to do the shout outs of our characters of our games on the videos. So that's how we get downloads from across the India as well. So overall, you will get a better reach if you have content in multiple languages. Amazing. I think big